Assalamu alaikum everyone. I hope everyone's doing fine. Today we are starting with a very important syllabus, economics, O levels. Economics, one of my favorite subjects. I would really want you to learn it thoroughly through my classes, through my lectures. And inshallah, आज हम उसका first topic करेंगे. The first unit, in total, economics has 6 units. And उसका first unit हम लोग start करेंगे. The basic economic problem is the first unit, unit number 1, the basic economic problem. And the first chapter that we have is the nature of economic problem, right? So let's start with the first unit. The name of the first unit is the basic economic problem. If you talk about it, this is the most important unit. You actually learn about economics over here. Unit number 1, the basic economic problem, right? So I will just talk about what economics is, what is the basic economic problem, and what do we have to understand over here. So the basic economic problem, right? So economics actually starts with the problem. Economics start ही problem से होती है. क्या problem है? Economics क्यों exist करती है economies के अंदर? That is what we'll be talking about today. So economics is basically a social science which actually talks about the resources available in an economy to fulfill the needs and wants of consumers. Not just consumers, but overall the economic agents. अब ये economic agents क्या है, आए हम लोग ज़रा देखते हैं. So first of all, economics start करते हुए. So first we'll define economics as a subject. So what is economics? Economics क्या है? Economics is a social science. क्या है ये? Social science. What does this social science do? It is a social science which studies about the resources available in an economy. Economy क्या होती है ये भी मैं बता देता हूं आपको. So economics is a social science which studies about the resources available in an economy to fulfill the needs and wants of consumers. All right, this is the simplest of definitions for economics, right? So economics क्या है? एक social science है which studies about the resources available in an economy to fulfill the needs and wants of consumers. अब ये consumers क्या है? Consumers are basically part of the economic agents. Now let's talk about the economic agents. Overall economy में हम सब economic agents के through ही सब कुछ पढ़ रहे होंगे. So what are the economic agents if we talk about them, right? Roughly. So basically if we talk about economic agents, तो economic agents हमारे कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो कि एक economy को complete करते हैं. Every economy actually has 3 different aspects and those refer to the economic agents. Economics के अंदर सिर्फ consumer नहीं है. Like for example, right now I am not a consumer, rather I'm producing. What am I producing? I'm producing a good or a service. I'm producing a service right now. What type of service am I producing? I'm producing a teaching service for you. And you all, whoever is watching this video, is actually consuming the service, right? Obviously, you are consuming it, I'm producing it. So we are part of the economy. Yes, I as a producer, I'm part of the economy. You as a consumer, you're part of the economy. So जब भी कोई economic activity होती है तो एक consumer होता है और एक producer होता है, right? दोनों economic activity में involve होंगे तभी economic activity generate होगी. And then there is another third agent, and that third agent is basically known as the government. Third party भी तो होती है ना, the one which is looking over us, which is controlling the resources of an economy, which is actually helping us to conduct the economic activity, right? So वो third agent कौन सा है? Government. तो कितने economic agents हैं? Number 1, consumers, right? Consumer is the one who consumes the services and goods, right? Number 2, producers, right? And number 3 is the government, right? And that government is actually controlling the resources and overseeing all the economic activity. So economics में जो भी होता है इन 3 economic agents के बीच में होता है, and that is what we'll be learning throughout our syllabus, right? So यहाँ पे हमारे पास economics के अंदर unit 1 basic economic problem, unit 1 और basic economics का introduction हो गया. अब आते हैं हम लोग chapter number 1 पे in focus, right? So today now we'll be starting with chapter number 1, chapter 1 right now.
is the nature of economic problem. Alright, so what is the chapter number 1 over here? पहले हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही प्रॉब्लम से होती है. Economics is a social science. Economics revolves around the economic agents that we've discussed over here. But what is actually the economic problem? Now, what is the nature of the economic problem? That is what we'll be discussing in chapter number 1. And very briefly, we'll be able to cover all the aspects, right? So chapter number 1, the nature of economic problem. Let's see in detail what is the nature of economic problem right from the scratch from chapter number 1 of our syllabus of O levels and IGCSE Economics, right? So O levels IGCSE Economics में पहला चैप्टर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसके अंदर जो बेसिक जो हमारी फर्स्ट सब हेडिंग है वो है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट? सो ये थोड़ा सा कभी कभार स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग बार बार ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों पढ़ रहे हैं. बेसिकली जो हमारा स्टार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इट्स अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम and the first heading itself we have to explain what's the economic problem, right? So baat kya hui thi, it will start from where we left in the definition of economics, that what is economics? It is social science which studies about the resources available in an economy to fulfill the needs and wants of consumers, right? So needs and wants हम सबके साथ है. मेरी भी कुछ needs हैं, कुछ wants हैं, आपकी भी कुछ needs हैं, कुछ wants हैं, सबकी needs and wants हैं. और वो needs and wants क्या है? What are the needs and wants? Those needs and wants are always limited or unlimited. Needs and wants are what? Limited or unlimited? Needs and wants are always unlimited. ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है. बेसिक इकोनॉमिक का एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि हम सबकी जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, सबकी नीड्स एंड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड. नीड्स क्या होती हैं? Essentials, if we talk about it, मैं ब्रैकेट में नीचे समझा भी लिख भी रहा हूँ. Essentials such as essential goods and services to live life, for example, food, water, shelter, basic ones in order to live your life. And what are wants? Wants are luxuries. Luxuries that people desire to have, but because of the limited resources, we cannot always have. Wants are ever growing. Wants आपकी बढ़ती रहती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई गाड़ी ली, आपने सिविक ले ली, तो अब आपको चाहिए उससे बेहतर गाड़ी. अब आप जाएंगे, बोलेंगे मुझे अकॉर्ड चाहिए या कैमरी चाहिए, या आप बोलेंगे मुझे स्पोर्टेज चाहिए, उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, आई वांट अ कॉम्पैक्ट एसयूवी. देन यू विल गो टुवर्ड्स हैविंग अ फॉर्च्यूनर, देन प्राडो, देन इवेंचुअली लैंड क्रूजर V8. सो आपकी वॉन्ट्स एवर ग्रोइंग है, राइट? आपको या तो इलेक्ट्रिक कार्स चाहिए, BYD चाहिए, शार्क और वट एवर, राइट? सो ये वॉन्ट्स कभी भी खत्म नहीं होंगे, राइट? सो नीड्स आर एसेंशियल्स, वॉन्ट्स आर लग्जरीज. And remember, whatever these needs and wants, they remain for eternity. आपकी कभी needs भी, जब तक आप जिंदा हो, needs भी आपकी खत्म नहीं होती. तो you cannot actually determine how many years you're living. तो needs भी एक तरीके से unlimited है, कभी ना खत्म होना है. हमेशा आपकी needs, आपको खाना तो खाना है, पानी तो पीना है, कितना पीना है लाइफ में ये तो आप determine नहीं कर सकते. तो वो भी आपकी never ending है, और wants तो है ही never ending, right? So needs and wants are unlimited. लेकिन ये needs and wants आती कैसे हमारे पास? Resources से. And now we'll be talking about resources, which is another part of the economic problem. And resources क्या है basically? Resources हमारे पास जो है वो है limited. Resources available to fulfill the needs and wants are limited. राइट? सो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड. जिन रिसोर्सेज से नीड्स एंड वांट्स फुलफिल करते हैं वो बहुत लिमिटेड है. यही हमारा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी कंप्लीट बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है. सो आई एम जस्ट री-हाइलाइटिंग वन थिंग ओवर हियर. हाउ डज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट? Chapter is nature of economic problem. Basic economic problem, needs and wants are unlimited, and to fulfill those needs and wants, resources available to fulfill the needs and wants are limited. This creates the problem. What does this lead to? अब further क्या है हमारे पास basic economic problem में? वो है कि जब हमारे पास unlimited needs and wants को fulfill करने के लिए जो resources available हैं वो जब limited होंगी, तो what do we need to do? Then we need to make a choice. We need to do what? We need to make a choice. For example, मेरे पास कुछ पैसे हैं. Let's say मेरे पास 8 million rupees हैं, 80 lakh rupees, right?
या 90 लाख रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, और मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे 2-3 गाड़ियां पसंद है उस रेंज में, फॉर एग्जांपल BYD की है एटो 3, और इसी तरह मेरे पास और गाड़ियां भी हैं उस रेंज में जो कि अवेलेबल हैं, जेको है और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। आई कैन इवन बाय अ सेडान इफ आई वांट, ग्रैंडी उससे कम में मिल जाएगी, सिविक भी मुझे मिल जाएगी, राइट। लेकिन मुझे पसंद नहीं है बहुत सारी, मुझे सेडान भी पसंद है, कॉम्पैक्ट एसयूवी भी पसंद है, बट कैन आई बाय ऑल ऑफ देम इन 9 मिलियन, राइट? नो, 9 मिलियन PKR के अंदर मुझे सिर्फ एक उस लेवल की गाड़ी मिलेगी। लेट्स से आई चूज BYD एटो, समवेयर अराउंड दैट मुझे उस रेंज में मिल रही है, तो मैं कोई सिविक या सेडान या कोई और भी ऐसी गाड़ी नहीं ले सकता। सो आई नीड टू मेक अ चॉइस इन दैट बजट। लेट्स से आई चूज BYD, and I have, then obviously I will have to give up, let's say, Civic, which I wanted, which I even like, but I can't get both. If I choose BYD, I would have to give up Civic, right? So that was basically a thing known as opportunity cost. So whenever, due to the limited resources, we choose one thing, which was BYD, and we gave up Civic. That Civic is our opportunity cost. क्या है? Opportunity cost, which is the next best alternative foregone. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ है, इसको हम जल्दी से यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो बेसिक जैसे ही डिफाइन करते हैं तो हम लोग फिर उसके बाद इसमें हाईलाइट करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस, राइट। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आप इसकी 2 मार्क डेफिनेशन पूछें, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली अ सिनेरियो वेयर a choice between goods and services leads us towards giving up the next best alternative or forgiving the next best alternative. Next best alternative क्या है? BYD मेरी चॉइस थी, तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मैं चाहता था सेडान भी लूँ, दिल में सिविक, एक आई एम अ सिविक लवर, सो फॉर एग्जांपल मुझे वो भी लेनी थी, लेकिन मैं उसको गिव अप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज टू गेट एन इलेक्ट्रिक कार। सो दैट वाज माय नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच आई फॉरगिव। Okay, so next best alternative forgone, opportunity cost. I hope you guys are clear. The example is given above. तो मैं वापस तुम लोगों को एक फाइनल राउंड अप देता हूं of the basic economic problem complete. So what is the basic economic problem? अगर आपके पास एक 4 mark question आता है, चाहिए तो this 4 mark question on what? Basically you have a question, what, for example, what is the basic economic problem? And you get it for 4 marks, economic problem. How would you solve it? I'll tell you. अगर 4 मार्क्स से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फ्रॉम नीड्स एंड वांट्स. यू विल एक्सप्लेन दैट बिकॉज नीड्स एंड वांट्स which are essentials and luxuries are unlimited, and to fulfill those needs and wants the resources available are limited. That leads us towards making a choice which eventually leads us to opportunity cost, which is the next best alternative forgone. अगर आप ये सारे एस्पेक्ट समझाएंगे right from here till here, here, and here, you will automatically go towards completing your basic economic problem and will answer your 4 mark question. So that is the basic start that you need to take. Okay, and that is how, what is the basic economic problem? It is the unlimited needs and wants that require resources which are limited, which lead you towards making a choice and then having you an opportunity cost, which is the next best alternative for God. Okay, moving forward, last thing about this chapter, last 2 things, which is basically the concept of free goods and economic goods, right? तो economic goods और free goods की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले free goods की बात करते हैं. Free goods, free, the word free is self-explanatory, right? Economic goods and free goods के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है free goods, right? What is free? When we talk about free goods refer to the goods which do not require any resources, as well as they do not have an opportunity cost. So what are free goods? These are goods, if you write it over here, these are goods which do not, so these are goods which do not require any resources to produce and do not have an opportunity cost. All right, so these goods do not have an opportunity cost, as well as they do not require any resources to be produced. If we talk about the examples, for example, air,
sunlight and water from rainfall. सो ये अगर हम देखें, एयर, अभी तक एयर पे कोई टैक्स भी नहीं लगा और एयर नेचुरली हमें मिल रही है, थैंक गॉड फॉर दैट। और सनलाइट वो भी नेचुरली आ रही है, ऑल्दो सनलाइट के से रिलेटेड गुड्स पे टैक्स लग चुका है, जैसे सोलर, इफ यू नो अबाउट इट, बट सनलाइट इटसेल्फ इज फ्री, ओके। इट डज नॉट, वी डोंट प्रोड्यूस इट थ्रू एनी रिसोर्स, इट कम्स नेचुरली, एयर कम्स नेचुरली, वाटर फ्रॉम रेनफॉल एंड वाटर इन द रिवर दैट इवन कम्स नेचुरली। उसको जब हम कंजर्व करते हैं तो वो इकोनॉमिक गुड बन जाता है, राइट। सो फ्री गुड्स ये हो गए। अब इकोनॉमिक गुड्स के ऊपर आते हैं कि व्हाट आर इकोनॉमिक गुड्स, लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर, ऑलराइट। सो इकोनॉमिक गुड्स, बहुत सिंपल सी बात है, economic goods, right? Okay, so economic goods kya hai? Very simple. If we talk about it, these are goods. Now economic goods, very simple. अगर हम बात करें, these are goods and services which require resources to produce and have an opportunity cost. Opportunity cost, which is the next best alternative for gone. So इसकी examples क्या हैं? Any of the goods, like for example, anything, table, anything that is produced with the resources, pen, phone, marker, anything, etc, anything, all right? So दिस इज व्हाट इट इज, इकोनॉमिक गुड्स। एक बात याद रखना आप लोग कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। दैट इज वेयर वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, एंड फॉर दिस चैप्टर आई हैव एन एंडिंग क्वेश्चन फॉर यू ऑल। व्हाई इज कार an economic good? I want you to answer that for a 4 marker, all right? Let's see how you do it. And you can just put it in the comments if you have the answer or if you have any queries, all right? So I hope you guys understood. Take care until the next chapter. Allah Hafiz.